मुंडी हिला रहे जेल जाएंगे क्या? ये सर एक्चुअली क्या मतलब मर्डर करने वाले थे सर। मतलब बच गया साहब तो मेरा क्या करूँ सर? ठीक है, तो पैसा देने को बोल रहा है, कोई लेने के लिए नहीं। सर पैसा पर मैं तो सर बच्चे बच्चे क्या करते हैं? अगर मैं मर जाता तो बच्चे क्या करते हैं? उन बच्चों ठीक का है, कौन ठीक देगा है, सर? पैसा दीजिए। वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट 376 का ऑफेंस रजिस्टर्ड कराती है। हस्बैंड 45 डेज तक एब्सकॉन्ड रहते हैं। इसी बीच वाइफ अपने दोनों बच्चों को छोड़ के चली जाती है। तो फिर परमानेंट एलिमनी किस बात की मालूम? लॉ इज वेरी क्लियर। मतलब सेक्शन 125(4) if while living in a red tree manor, ठीक है ना? मतलब मेरे पास में दोनों किड्स भी मेरे पास में, दोनों बच्चे मेरे पास में, मेरे पास मेरी मदर है पास में। There are two appeals. Yes, court is. So one is against By the husband against the permanent alimony, challenging the permanent alimony. And second is filed by the wife challenging the divorce petition, divorce decree, and also the quantum of permanent alimony. और वो तो alimony. At least come to some agreement, settlement. He is rich, my lord. He is a businessman. He is hiding all his income, and he has 7 properties. So that is the cause for seeking divorce and Not the issue. the rich person. No, my lord. So all the whatever allegations he is imposing on her, And see, if you can try. they are Come not. to a settlement. They- Both of you have come My lord has against suggested the it. model. My lord has suggested it on the previous day, but what they said don't want to pay even a single rupee. What they said. So, Mr. Verma, ऑलरेडी एडेंट्री single rupees भी नहीं रहते. ऑलरेडी एडेंट्री के एलिगेशन है। इसके अलावा वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट 376 का ऑफेंस रजिस्टर्ड कराती है। हस्बैंड 45 डेज तक एब्सकॉन्ड रहते हैं। इसी बीच वाइफ अपने दोनों बच्चों को छोड़ के चली जाती है। तो फिर परमानेंट एलिमनी किस बात की मालूम? कोर्ट का ऑर्डर है ना आपको। वही मैंने चैलेंज करा मालूम। मतलब ना सिर्फ कितना अमाउंट कितना? 15,000 पर मंथ, 50? 15,000 में। And around my lord 10 lakh rupees because it was ordered since from the 10 lakh is filing of the areas. yes my lord filing of the case my lord. वो ऑर्डर भी मानद उसके अंदर डेट का जो है वो मानद वो मिस्टेक है। ठीक है मिस्टर वर्मा, क्योंकि कंसिलिएशन इज नॉट पॉसिबल, वी विल हियर इट फाइनली. Till then you continue to pay 15,000 मानद unless that order is set aside. मतलब आप इसको नेक्स्ट वीक रख लें मानद। It's not possible for hearing all matters. मानद लॉ इज वेरी क्लियर। मानद सेक्शन 125(4) if while living in a red tree manor, ठीक है ना? मानद मेरे पास में दोनों किड्स भी मेरे पास में, दोनों बच्चे मेरे पास में, मेरे पास मेरी मदर है पास में। और उसके बाद भी आप इन्होंने पूरी We don't know, Mr. Sir, but the prima facie there is an order against. Unless that order is set aside by the state. उसी के लिए स्टे उसी एप्लीकेशन को आप नेक्स्ट वीक रख मानद। It's not स्टेटमेंट एलिमनी है, बाद में विचार करेंगे। फिलहाल जो दिए हुए हैं कम से कम अभी प्रेजेंट में देना चालू करिए। ये छोटा सा भाई अमाउंट अभी एरिया से स्टे कर देंगे और आप प्रेजेंट में तो दीजिए, स्टेट एरिया से स्टे कर देंगे आपसे। एरियाज वी विल स्टे रिकवरी ऑफ एरियाज, बट कंटिन्यू टू पे 15,000 पर मंथ. इट्स अ वेरी रीजनेबल अमाउंट दैट रीजनेबल you are on merit that she is not entitled because of the adultery, etc. That we will examine. But prima facie there is an order, so we have to strike balance between the parties. लिखिए पहले वाले में लिखिए श्री समीर कुमार ये फर्स्ट। जो अभी जो है रिस्पॉन्सिव, हाँ अभी से करंट में दीजिए। मुंडी हिला रहे जेल जाएंगे क्या? ये सर एक्चुअली क्या मतलब मर्डर करने वाले थे सर। मतलब बच गया साहब तो मेरा क्या करूँ सर? ठीक है, तो पैसा देने को बोल रहा है, कोई लेने के लिए नहीं। सर पैसा पर मैं तो सर बच्चे क्या करते हैं? अगर मैं मर जाता तो बच्चे क्या करते हैं? उन बच्चों का ठीक है, कौन देगा सर? पैसा दीजिए, पैसा देना पड़ेगा चाहे जो भी हो। पैसा सर कोर्ट का ऑर्डर है आपके खिलाफ अभी, जब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो रही। 15,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। और सर वो बच्चों को छोड़ देते हैं और मेरे सर एक गलत तरीके से पूरा सुनेंगे कोई अभी देना अंतिम फैसला नहीं करता। मतलब एक छोटा सा सबमिशन या तो विदिन 2 मंथ 3 मंथ कभी भी फाइनली कर देंगे मिस्टर वर्मा, पर लिख दीजिए श्री समीर वर्मा और अपील 2209 of 2025 श्री समीर वर्मा
for the appellant, Sri Akashdeep Shukla, for the respondent. The present appeal is filed against the order of the family court, whereby the family court has granted divorce in favor of the appellant. However, awarded maintenance of rupees 15,000 per month to the respondent's wife from 28/1/2021. Mr. Likhe, the respondent has also filed appeal FA number 2177 of 2025, being aggrieved by the divorce decree and the award of Quantum. aggrieved by the inadequate quantum awarded as permanent alimony. Mr. Likhe. Since the parties are represented, therefore no notice is required to be issued. Mr. Likhe. Hard on ISO and so, ये first appeal वर्मा जी वाले में, which is an application for stay of the impugned order by which the maintenance of rupees 15,000 with effect from 28/1/2021 has been ordered, comma. After hearing learned counsel for the parties, we direct that so far the order directing for payment of maintenance from 28/1/2021 shall remain stayed so far it relates, so far the areas of maintenance is concerned. However, the appellant shall continue to pay the monthly maintenance of rupees 15,000 to the respondent till the decision of the appeal. With the aforesaid ISO and so is disposed of. Likhe. Both the parties agree to argue the matter. Finally, कब जुलाई में रखते हैं? Anytime, my lord. Likhe, argue the matter, list the matter for final hearing after decision in the month of, in week commencing 6 July 2026. But the maintenance we can take from March. Or something. She's into, she's into. We are मार्च चल रहा है My lord. March इसी मंथ के मार्च के आ रही है Obviously.